म्यूचुअल फंड सही है? म्यूचुअल फंड सही है। सही है। सही है। सही है यार, बिल्कुल सही है। बस बहुत देख ली यार म्यूचुअल फंड की एड्स। कोई बताएगा म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, और क्या म्यूचुअल फंड सही में सही है? मैं बताता हूँ। उससे पहले अपना एक सिंपल सा फंडा है। आपने पैसे कमा लिया, आपको क्या चाहिए? पैसे से पैसे बनना चाहिए, बराबर। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं ये म्यूचुअल फंड का टॉपिक आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। हमें रॉकेट लॉन्च थोड़ी ना करना है, उसके लिए तो अपना इसरो है ना। हमें क्या करना है? हमें बस एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में लैंड करना है और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना है, बराबर। आओ म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ। ओके, तो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पूरे चैप्टर्स विद टाइम स्टैम्प्स लिस्ट किए हैं। सो अगर आपको कभी भी लगे कि वापस जाके देखना है तो आप देख सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज्ड बाय AMCs, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। हर एक फंड का एक फंड मैनेजर होता है। सो दे पुल इन द मनी फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टर्स, पूरे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करते, इन्वेस्ट देम इन सिक्योरिटीज, दैट इज स्टॉक्स होगा, बॉन्ड्स होगे, गोल्ड होगा, एक्सेट्रा, डिफरेंट एसेट क्लासेस। देन आफ्टर दैट दे टेक द कट, दैट इज द मैनेजमेंट फीस जो भी है, और फिर जो भी रिटर्न्स है वो इन्वेस्टर्स को वापस देते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। नाउ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, फर्स्ट is equity funds. So equity funds is investing in stocks. So in this first category is ELSS, that is equity linked saving scheme. This is a tax saving fund which gives the exemptions of up to 1.5 lakh rupees, okay, on your annual taxable income. 1.5 lakhs तक जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं इस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। बाकी के जो टाइप्स है इक्विटी फंड्स के वो हम बाद में देखेंगे डिटेल में। Second is debt funds. Debt funds is basically you lend your money to government or private companies and then you get the returns. So government private companies को आप आपका पैसा lend करते हैं through what? Bonds. So these are debt funds. Number 3 is hybrid schemes. So in this, your investments are diversified among different asset classes. So that is stocks, bonds, gold, कभी कभी रियल एस्टेट भी होता है। So इससे क्या होता है, आपका जो रिस्क है वो पूरा डाइवर्सिफाइड हो जाता है डिफरेंट एसेट क्लासेस में। So this was all the types of the mutual funds. Now let's focus solely on equity fund. उसके पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जब आपका म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना है तब काम आएंगे। So first is NAV, that is net asset value of that particular fund. Net asset value means asset minus liabilities divided by total number of outstanding shares. Basically जैसे स्टॉक्स का जो प्राइसेस रहते हैं, स्टॉक्स के प्राइसेस रहते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड का NAV रहता है। ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्टॉक्स के प्राइसेस है वो पूरे दिन में कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं, राइट। बट म्यूचुअल फंड का जो NAV है दैट ओनली चेंजेस वंस पर डे एट द एंड ऑफ द डे। गॉट इट? ओके, नाउ सेकंड टर्म इज total expense ratio. It is the cost that AMCs take from you for managing and operating the mutual fund for you. So this comes in the percentage. So आप जब देखेंगे तब 0.88, 0.67 ऐसे percentage होंगे. So this is your annual fees that you give to the mutual fund. जो हमने देखा था ना NAV में कि तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है, तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो लायबिलिटीज है। सो वो कॉम्पेंसेट होके ही NAV का वैल्यू निकलता है। ओके, जो TR है ना उसमें मैनेजमेंट फीस और काफी सारे फीस होते हैं। उसमें और एक चीज होती है, वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज बोनस पेड टू फाइनेंशियल एडवाइजर्स और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय AMCs टू एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन AMCs एंड इन्वेस्टर्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ये एक्सपेंस रेशियो में ही ऐड किया जाता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट there are two plans in mutual fund, very important. One is direct plan and second is regular plan. Direct plan में क्या होता है, आप AMC से directly mutual funds खरीदते हो, और regular plan में आप वो financial advisors through खरीदते हो। तो जो expense ratio होता है वो direct plan का regular plan से कम होता है। So if you are planning to invest in mutual funds, opt for direct plan. इससे आपका जो return है वो बढ़ेगा क्योंकि expense ratio कम होगा, आपको जो fees pay करेंगे AMCs को वो कम रहेगी। Okay, now third is exit load एंड लॉक इन पीरियड। सो एग्जिट लोड क्या होता है, अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया लेकिन वो म्यूचुअल फंड आपने एक साल से पहले अगर सेल किया तो आपको AMCs को फीस देनी पड़ती है और उसको आप एग्जिट लोड बोलते हैं। सो वो बेसिकली 1% to 2% ऐसा रहता है। सेकंड इज लॉक इन पीरियड, नंबर ऑफ इयर्स इन विच द इन्वेस्टर्स कैन नॉट सेल देयर फंड एंड सम म्यूचुअल फंड्स डोंट हैव दिस लॉक इन पीरियड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड रिक्वायर डीमैट अकाउंट? सो
you don't require Demat account to invest in mutual funds. Different platforms that you can invest through is Coin by Zerodha, then there's Grow, then Paytm Money, and there are so many of them. In Grow, I've read that you don't need to have Demat account to invest, but I personally use Coin by Zerodha. It has clean and clutter-free interface, but you need to have Demat account in Zerodha to use Coin. So if you want to open Demat account in Zerodha, I'll put the link in description and also put a link to the Coin website. ठीक है, अब ये तो हो गए पूरे टर्म्स म्यूचुअल फंड्स के, जो भी टर्मिनोलॉजीज है जो आपको काम नहीं आने वाले हैं. सो आप प्लेटफॉर्म में जाएंगे, वहां पे भी जो नए नए टर्मिनोलॉजीज दिख रहे हैं वो भी देख लेंगे और एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि जिससे हमें म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में आसानी हो. ओके, सो लेट्स गो ऑन द कॉइन. So this is Coin website. Now I am in mutual funds part in the explore page. Okay, so I'm in explore page right now. अभी जो मैंने बताया था कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सो ये देखो इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है. ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स जो होते हैं ना, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स मतलब जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, सो these will come under solution oriented funds. Okay, now let's focus on equity funds. So equivalent funds है, so मैं मल्टी कैप ELSS तो हमने कवर कर लिया, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है. सो कैप मतलब क्या कि कैपिटल मतलब मार्केट कैपिटल. सो स्टॉक मार्केट्स में जो भी कंपनीज लिस्टेड है दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. हाउ डू दीज सेगमेंट्स मैटर इन म्यूचुअल फंड? सो जो लार्ज कैप कंपनीज है उनका जो रिस्क है वो मीडियम टू लो रहता है और वोलेटिलिटी जो है वो लो रहती है. सो वोलेटिलिटी मीन्स हाउ मच और हाउ क्विकली द प्राइसेस मूव ओवर अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम. सो अगर हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स रहेंगे या प्राइसेस हाई वोलेटाइल रहेगी तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है. सो अब लार्ज कैप कंपनीज के एग्जांपल क्या है? रिलायंस है, HDFC है. सो दे हैव लो रिस्क एंड लो वोलेटिलिटी. नाउ व्हाइल सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड यू विल आल्सो सी द टर्म ब्लू चिप म्यूचुअल फंड. दे गिव solid and stable performance over the long term. Second is mid cap. So their risk is medium to high and volatility is medium. इनके जो funds है इनका दूसरा नाम क्या है? Emerging equities fund. Third is small cap. These are high volatile, high risk stocks, but they also have high reward. So in multi cap and flexi cap, you get the mix of all the 3 segments: large, mid and small. The difference between multi cap and flexi cap is that multi caps have a mandatory 25% allocation in each segment. इसमें आपको small cap में भी 25% है, इसलिए आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है. सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड म्यूचुअल फंड यू कैन ऑप्ट फॉर मल्टी कैप. सेकंड इज फ्लेक्सी कैप. फ्लेक्सी कैप हैज नो सच लिमिट एज मल्टी कैप. दिस इज अ डायनामिक इक्विटी स्कीम, मींस देयर इज लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग द रिस्क अकॉर्डिंग टू द मार्केट वोलेटिलिटी. ओके, सो अगर ज्यादा वोलेटिलिटी होंगी तो फंड मैनेजर्स क्या करेंगे? स्मॉल कैप का जो परसेंटेज है वो कम कर देंगे. लाइकवाइज. एंड वन मोर फंड इज इंडेक्स फंड. ये जो फंड्स है ये जो पॉपुलर स्टॉक मार्केट इंडाइसेस है जैसे निफ्टी 50 इनको वो मिमिक करते हैं. सो सपोज निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है बट सबका जो वेटेज है वो अलग अलग है. सो इन फंड्स में भी वो सेम वेटेज से ही इन्वेस्ट किया जाता है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर बेटिंग ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंडेक्स फंड्स आर मस्ट हैव इन योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो. सो अभी हम इक्विटी सिलेक्ट करते हैं और एनी सिलेक्ट करते हैं. अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा उसको समझ लेते हैं. सो ये जो HDFC है दिस इज AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी. जो दूसरा है वो आपको इक्विटी फंड का टाइप दिखेगा. सो सेकंड दिस इज मिड कैप, दिस इज फ्लेक्सी कैप. सो ऐसे आपको टाइप दिखेंगे. नाउ व्हाट इज दिस growth mean and IDCW interim mean? So IDCW stands for income distribution cum capital withdrawal. So difference between growth and IDCW is based on how the returns are distributed. So mutual fund में क्या होता है? स्टॉक्स इन्वेस्ट किए जाते हैं, वो जो स्टॉक्स का डिविडेंड्स आता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पे ये 2 टाइप्स है. सो ग्रोथ प्लान में क्या होता है? जो भी डिविडेंड्स है या जो भी प्रॉफिट्स है वो री इन्वेस्ट किए जाते हैं म्यूचुअल फंड में. सो इससे क्या होता है कि कंपाउंडिंग जो है वो आपके फेवर में वर्क करती है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म प्लान डू ऑप्ट फॉर ग्रोथ फंड. और सेकंड इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर रेगुलर पे आउट्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन. ओके, तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे डिविडेंड टाइप में ये ग्रोथ है और IDCW मंथली, एनुअल, हाफ ईयरली. सो दिस इज द इंटरवल इन विच द म्यूचुअल फंड पेज यू. सो अब यहाँ पर क्या है? AUM. सो AUM मीन्स क्या? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. मतलब सिंपल भाषा में AUM मतलब अभी भी जितना भी पैसा उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है ना वो आपको दिखता है. मतलब मीडियम टू हाई अगर AUM रहा
तो इससे क्या होता है, क्या हमें समझता है कि उस म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी कितनी है, मतलब कितने लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, राइट? नाउ लेट्स गो इनटू वन म्यूचुअल फंड. You can see here we talked about NAV. Okay, now CAGR is compounded annual growth rate. So this is minimum investment. So you can see here exit load. So this mutual fund has exit load 1% and the expense ratio is 0.88%. Okay, अब ये सब तो देख लिया. जब आप खुद करेंगे तब आप सिलेक्ट कैसे करेंगे म्यूचुअल फंड? So let's make a checklist. So first thing is we opt for direct plan. हम direct plan पे ऑप्ट करेंगे. So यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंस रेशियो जो है हमारा कम हो जाएगा. सेकंड इज IDCW और ग्रोथ. So if you are looking for long term investment, then opt for growth. Otherwise, for regular payout, opt for IDCW. Now, third point in the checklist is market cap, market capitalization. What should you choose? Large cap, mid cap, small cap, or the mix of all those? Now, this decision solely depends on your risk-taking capacity and it differs from person to person. So, according to me, you should choose a fund which has higher percentage of large cap and mid cap and a little bit lower percentage of small cap. So, इससे क्या होता है, आपकी जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी, but also you will have above average returns. So, we can opt for फ्लेक्सी कैप फंड, राइट? बट इसमें आपको क्या देखना है कि लार्ज कैप और मिड कैप का जो परसेंटेज है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा. उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए. नेक्स्ट इज रिटर्न्स. तो जो रिटर्न्स है 3 साल से आगे ही देखना है, क्योंकि 1 ईयर 2 ईयर जो है वो बहुत कम टाइम फ्रेम होता है और इससे हम समझ भी नहीं सकते कि वो म्यूचुअल फंड अच्छे से वर्क कर रहा नहीं कर रहा. ऑफ कोर्स इफ दैट फंड हैज परफॉर्म्ड वेल इन द पास्ट, इट डजंट मीन दैट इट परफॉर्म्स वेल इन द फ्यूचर, बट रिटर्न्स देख के हमें म्यूचुअल फंड डिसाइड करने में आसानी हो जाती है. फिफ्थ क्या है, एक्सपेंस रेशियो. अब जब आप डायरेक्ट प्लान लेंगे तब भी डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट एक्सपेंस रेशियो होते हैं. सो ऑप्ट फॉर दोज फंड्स व्हिच हैव लो एक्सपेंस रेशियो. नेक्स्ट इज AUM एंड एज. सो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, आपको देखना है कि कितना कैपिटल उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट है. इससे हमें पॉपुलैरिटी समझ में आती है और मिड टू हाई AUM में ही इन्वेस्ट करना. वो म्यूचुअल फंड लॉन्च होके कितने साल हो गए. इट शुड बी एटलीस्ट 5 years इनटू द मार्केट. दैट टेल्स अस दैट द फंड इज वेल एस्टैब्लिश्ड. ओके, आपको अगर एज देखना होगा तो आप कंपेयर बटन क्लिक करो और यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो लॉन्च डेट जो है क्या है, 2013. दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड म्यूचुअल फंड. So here's a full checklist. You can take a screenshot of it if you want for the future use. ठीक है, अब म्यूचुअल फंड तो चूज कर लिया. अब इसे SIP करे या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करे. जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज मोस्ट बेनिफिशियल व्हेन यू इन्वेस्ट ड्यूरिंग मार्केट लो. इन दिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एंटर एट द राइट पॉइंट. सेकंड ऑप्शन इज SIP, that is systematic investment plan. So in this you invest a fixed amount at regular interval. So SIP में क्या होता है, आपको डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में एंटर करने का आपको चांस मिलता है. आपको ज्यादा मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि मंथली आपका पैसा जाने वाला है, राइट? सो SIP से क्या होता है, मार्केट के हाईज है और लोज है वो एवरेज आउट हो जाते हैं. ओके, नाउ यू नो हाउ टू चूज द म्यूचुअल फंड, हाउ टू इन्वेस्ट इन इट. व्हाट इफ आफ्टर यू इन्वेस्ट इन दैट म्यूचुअल फंड इट डजंट गिव यू एक्सपेक्टेड रिटर्न्स? व्हाट विल यू डू? डोंट यू थिंक 2 is always better than 1? So don't you think building a mutual fund portfolio is a good idea? We have heard this so many times, right? Don't put all your eggs in one basket. So if one mutual fund doesn't give you expected returns, maybe other will cover it up. So to build the mutual fund portfolio, I'll give you some options according to me. Please note that this is not a tip. Please do your own research and analysis and only then choose the mutual fund as per your risk appetite. So first option to have in portfolio that comes to my mind is index funds. अब index funds का क्या है, वो आपको high returns तो नहीं देंगे, लेकिन इनके benefits बहुत है. If you believe in India as a developing country, if you believe in Indian economy that is going to give you good returns, index funds like Nifty 50 is must for you. Now benefits of index funds, first low fees होती है. अब low fees क्यों होती है, क्योंकि ये passive fund है. So index funds also have tax advantages. It generates a low taxable income. And third, low risk. Second is you can opt for flexi cap fund, but keep in mind that in that fund the ratio of large cap and mid cap should be greater as compared to small cap. And third option you can opt is, so if you are risk averse or if you are on your way to retirement, then you can choose for large cap funds, that is blue chip funds. इनका क्या है कि रिटर्न्स भले कम होंगे या इतने ज्यादा नहीं होंगे as compared to small cap and mid cap, but ये जो रिटर्न्स है ना वो सॉलिड और स्टेबल होते हैं, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते ये रिटर्न्स. बट इफ यू आर अ रिस्क टेकर, if you are a young blood, so opt for emerging equities, so that is solely mid cap. Okay, I hope I've covered all the topics in the mutual funds. In case I've left some or you have some doubts, do comment. I'll try to answer all the questions as best as I can. Thank you so much for watching this video.
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, उनको भी हेल्पफुल होगा। दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज इन्वेस्टिंग अनरावेल्ड। अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक है, जरूर देखना। उस वीडियो में मैंने इन्वेस्टिंग को जो माइंडसेट लगता है उसके बारे में बात की है। एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज विल बी अबाउट द अल्टरनेटिव्स टू म्यूचुअल फंड, स्मॉल केस एंड वन रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट आई विल ब्रिंग फॉर you guys, so stay tuned for that. If you really like this video, hit the like button and do subscribe for more such content. So keep smiling, keep investing. Jai Hind.